Fluency in a language is very important, but equally important is to be accurate in it. By accuracy, I mean to be grammatically correct. Hi everyone, I'm Dr. Priyanka, and in today's video, we are going to learn about 10 common English mistakes that we tend to make in our daily conversations. So let's get going. So the first sentence is, the baby is so cute, he has gone on you. जब भी हम बहुत क्यूट बच्चे को देखते हैं तो हम जनरली उनके पेरेंट्स को ये कॉम्प्लीमेंट देते हैं. This is a wrong statement. The right statement is the baby is so cute he has taken after you. तो इसके पीछे रीजन ये है कि बेबी ने उनके जीन्स को इनहेरिट किया है, उनसे कुछ लिया है. So the word is taken. The right statement is the baby is so cute he has taken after you. The next statement is I did not meet nobody. Now English language में एक रूल है कि आप एक सेंटेंस में दो नेगेटिव कॉम्पोनेंट्स नहीं यूज करते. Nobody में no लगा हुआ है, it's already a negative component, and इस सेंटेंस में already आप did not use कर चुके हो. So when you say I did not, the word you should be using next is anybody and not nobody. The next blunder that we tend to make is when we say, I need an advice from you about buying a car. So in English language, we do not quantify the word advice. हमें यहाँ पे बोलना चाहिए, I need some advice from you about buying a car or about buying a house. However, ideas जो word है उसको हम quantify कर सकते हैं. So we can say I need an idea from you or I need a few ideas from you. But जब हम word use करें advice तो उसके साथ हम an नहीं लगाते, quantify नहीं करते, so हम उसे कहते हैं some. So the next one is when we say I saw a dream last night. सपना आप ऑलरेडी देख चुके हो, सो आपको 100 वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है. यू शुड से आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट और आई ड्रेम्ट लास्ट नाइट. सो प्लीज डू नॉट यूज द वर्ड 100. ड्रीम में ऑलरेडी 100 वर्ड कन्वे हो जाता है, आप सपना देख चुके हो. सो प्लीज से आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट. सो द नेक्स्ट मिस्टेक इज आई एम गोइंग टू गिव एन एग्जाम टुमारो. Wrong statement. The right statements should be I'm going to take an exam tomorrow. आप क्वेश्चन पेपर लोगे और फिर आप उसे लिखोगे. आप क्वेश्चन पेपर वहाँ देने नहीं जा रहे हो. The next statement which you can use for this is I'm going to write an exam tomorrow. अगर कोई written examination है तो आप ये बोल सकते हैं. या फिर I'm going to sit for an exam tomorrow. But please don't commit the blunder of saying I'm going to give an exam tomorrow. The next one is, do you know who is that woman? Wrong statement. The right statement is, do you know who that woman is? Now in English grammar, there is a rule कि जब आप किसी के बारे में किसी और से पूछ रहे होते हैं तो आप पहले question word use करते हो, उसके बाद auxiliary या फिर helping verb लगाते हैं, उसके बाद आप subject के बारे में mention करते हैं and then you put the main verb. So in this sentence, do you know who is the question word. That helping verb हो गया. Woman is the subject, is the main verb. So, do you know who that woman is? Na ki, do you know who is that woman? The next is, one of my friend lives in Australia. Wrong sentence. आप एक ग्रुप में से किसी एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, so आप उस ग्रुप को मेंशन करोगे, फ्रेंड्स के ग्रुप को as friends, ना कि friend. So you will say one of my friends lives in Australia or whichever place you want to say. He has white hairs. Big blunder. This sentence contains two wrong words. First is English language में हम सफ़ेद बालों को white नहीं grey बोलते हैं. The beauty of English language, guys. And hair का plural hair होता है. So the right statement is he has grey hair. Another tip. कई लोग होते हैं जिनके बाल मिक्स कलर के यानी सफ़ेद और ब्लैक होते हैं, तो उनको आप बोल सकते हैं salt and pepper look. The next one, open page 55 of your book. Teachers out there, please take note. Wrong statement. I have heard this statement many a time from my teachers when I was a student. It should be open your book to page 55, ना कि open page 55 of your book. उसका रीज़न ये है कि आप जब अपने स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहे होते हैं तो आप उनको पहले रेफर करते हो, आप सब्जेक्ट को पहले रेफर करते हो. सो द सेंटेंस ऑर्डर शुड बी ओपन योर बुक एंड देन द नेक्स्ट कमांड टू पेज 55.
The next one, me and my friends will watch a movie tonight. So English language etiquettes say कि अगर आप अपने साथ किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो आप उन्हें पहले रेफर करेंगे, यानी कि my friends पहले आएगा, and when you talk about yourself along with somebody you use the word I. So the right sentence is my friends and I will watch a movie tonight and not me and my friends. The next is who are you talking to? Wrong statement. यहाँ पे होना चाहिए whom are you talking to? यहाँ पे जो you है वो एक subject pronoun है, आप उनसे बात कर रहे हैं किसी और के बारे में, तो जो word use होता है किसी और के बारे में वो होता है whom. Who is a question word, right? आप यहाँ पे किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो उन्हें आप रेफर करेंगे whom are you talking to? Alright guys, that was it for today's video. I hope it was of some help to you. And if it was, please subscribe the channel, give it a like, and also don't forget to take care of yourselves. Till I see you next.